अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम W.B Yeats की दो पोम हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द सेकंड कमिंग बाय, आगे भी कुछ था, आई थिंक वो मैं भूल गई हूँ। तो इसके अलावा जो दूसरी पोइम है वो है सेलिंग टू बैजेंटियम। द फर्स्ट वन इज़ द सेकंड कमिंग। तो यहाँ पे डिसाइड करते हैं स्टार्ट। राइटर्स रियल नेम इज़ रिटन बटलर येट्स. He was an Irish poet, dramatist and writer and one of the most important figures of the 20th century literature. He was born on 13 June 1865, 28 January 1939. He also won Nobel Prize for Literature in 1923. His writing style focused on lyrical romantic style and they focus on a love language, love, longing and loss, also on Irish myths. तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि मैंने कितना राइटर्स का इंट्रो लिखा है। तो इतना इंट्रो इनफ होता है अगर आप लोग अपने फाइनल्स में किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं किसी एक राइटर, स्पेसिफिक राइटर। The second coming poem was written by W.B Yeats. This poem was written in 1919 and published in 1920. W.B Yeats was much inspired by William Wordsworth, William Blake, John Keats, and from many other poets. Most important theme in this poem are violence, anarchy, Christianity, prophecy, and meaninglessness. The title of the poem, The Second Coming, referred to the second coming of return of Jesus Christ in order to save humanity. The speaker of the poem described the unstable situation in the world and hopes for second coming. Analysis. The second coming is one of the most successful poem by W.B Yeats. It is a non-rhyming poem. It is a 22-line poem expressing the opinion of the second coming. It is the first stanza of poem. Poet describes state of complete disorder in Ireland. The poet says time passes very fast and the wheel of the time also moves fast. The poet says that the falcon doesn't hear the falconer. ये line आपने लास्ट में लिखनी है, ठीक है? The poet says that the falconer doesn't hear the falconer. Here is the falcon is a small bird of prey and the falconer is the trainer who gives the training. यहाँ पे वो कह रहा है द पोएट सेज दैट द फाल्कन डजंट हेयर द फाल्कन. जो फाल्कन है वो फाल्कनर को नहीं सुन रहा क्योंकि जो फाल्कन है वो एक स्मॉल बर्ड है और जो फाल्कनर है वो एक ट्रेनर है. वो अपने बर्ड को बताता था कि कैसे दुआ मांगते हैं. तो अब वो बर्ड जो है वो अपने मालिक की बात ही नहीं सुन रहा. हु गिव्स द ट्रेनिंग ऑफ प्रेइंग टू द फाल्कनर बट नाउ द फाल्कनर इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द ट्रेनर. Poet wanted to say that situation is out of control in Ireland. There is a state of anarchy. Everyone in the country, people doesn't respect laws and rules. Innocent and weak people are destroyed and killed day by day. The good people are losing their faith and confidence, and bad people are growing very fast. Poet says evil people are being stronger and good, and virtuous people are being weaker. यही आजकल हमारी सोसाइटी में हो रहा है. जो अच्छे लोग होते हैं उनको सब लोग बुरा समझते हैं और जो बुरे लोग होते हैं उन्हें सब लोग अच्छा समझने लग जाते हैं. Poet shows that time of 20th century in Ireland is in the first stanza. Poet talks about anarchy that's separate in Ireland. Now in second stanza, poet has a strong belief that the second coming of God can save this earth from sins. The poet says when sins are on the top, the God come on earth टू सेव ह्यूमन काइंड. तो वो कह रहा है कि अब गॉड ही है जो आएगा और सारी जो सेव करेगा ह्यूमन काइंड को फ्रॉम सिंस. द वायलेंस हैज क्रॉस द लिमिट एंड नाउ इट्स टाइम टू कमिंग ऑफ God on earth. The poet imagined that the second coming of God have a strange shape. It would have the head of the man and the body of the lion. बॉडी ऑफ द लाइन लिखना था, यहाँ पे मैंने दूसरे लाइन का स्पेलिंग लिखा. यहाँ पे LION आएगा, ठीक है. एंड फर्स्ट विल अपीयर इन अ डेजर्ट. His shine will be unbreakable like the shine of the sun. Now he says the God is now awake after the sleep of 20th century and God will come. Conclusion में आपने लिख देना the poem is a representation of the poem and situation in Ireland during the 20th century and W.B Yeats believe on second coming of God to save humanity. यहाँ पे अगर हम अब second poem के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो है Sailing to Byzantium by W.B Yeats. Sailing to Byzantium is a poem. It was first published in a collection of the D Tower in 1928 and this poem basically a contrast between youth and old age, morality and spirituality, immorality.
The title Sailing to Byzantium holds historical and symbolic significance. Byzantium, the ancient city later known as Constantinople, Istanbul कहते हैं, ठीक है, and now is represent age Istanbul, was a center of spiritual and intellectual thing. The speaker, who is traveling from Ireland, a country he feels is no place for old men. The poem presents several themes, including spirituality, old age, vs youth, culture, and art. The speaker is more concerned with the study of artwork. The speaker feels the country in which he resigned is no place for the old, it's only a welcoming for the young people. अच्छा, ये पोइम इस ऑल अबाउट थी कि मतलब कि ये प्लेस जो रहेगी आयरलैंड की, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि यंग हैं, जो कि हर काम को करना जानते हैं. ओल्ड लोगों के लिए ये नहीं रही, इसलिए ओल्ड लोग जो हैं वो अब इस्तांबुल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर स्पिरिचुअल प्लेस है, वो एक वहाँ पे एक जिसकी तरफ वो लोग मूव कर रहे हैं. एंड देन ही डिसाइडेड टू Byzantium वेयर एज इज़ नॉट एन इशू. देन ही डिसाइडेड टू मूव टू Byzantium वेयर एज इज़ नॉट एन इशू, कि वहाँ पे एज का कोई इशू नहीं होता, जो मर्जी है सबको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं. स्पीकर डिज़ायर टू लीव हिज कंट्री एंड डिज़ायर टू escape them from Ireland's sensual music. This poem is divided into 4 stanzas. Each stanza contains on 8 lines. There is a set of rhyme throughout the poem of the W.B Yeats wrote the poem in iambic pentameter, and there is a rhyming couplet at the end of the each stanza. According to poet, youth busy in worldly pleasure, and while old people busy for betterment of their soul. People also talk about the dying culture of his time, and thus this poem is full of meter, imagery, metaphor, symbolism as well. So I am done with this poem also. अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह मैं एक्टिव रहने की कोशिश करूँगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है आप लोगों से, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो हैं वीडियोज़ को शेयर करें, जो आपको अच्छी लगती है, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप्स में, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त. सी यू सून. अल्लाह हाफिज़.